Today we will discuss about acute pancreatitis, and I am getting frequent requests that please post in Hindi also. So continue watching this video. In the last I will summarize in Hindi. मैं लास्ट में इस पूरे टॉक का जिस्ट आपको हिंदी में भी समझाऊंगा. So acute pancreatitis is a disease in which there is a organ pancreas, which is a endocrine plus exocrine organ, just like liver. It is very important for digestion by producing enzymes, but also it produces insulin, glucagon and other hormones which regulate blood sugar and other metabolic factors. If the sudden pancreas swelling is developing, then we call it acute pancreatitis. Possibility is more in a patient who is having alcohol usage, who is smoker, or a person who is having gallbladder stones or gallbladder sludge. They are high risk for developing this acute pancreatitis. It is very important to timely diagnose, and then we can treat in steps and save the patient's life. So if these high risk, any of the patients is developing severe acute pain, abdomen radiating to back, vomiting, or these symptoms, then we should get an ultrasound and blood test amylase lipase. And if these values are raised, a diagnosis of acute pancreatitis is settled. It is very important. The first 3 days of treatment are very important, particularly the first 24 hours. In this time, there's a fluid deficit, intravascular fluid deficit is there, and the fluid goes in third stage. So IV fluids has to be given in the first 2 to 3 days to maintain the perfusion of the organs. This treatment will define whether that patient will improve or will land into end organ failure like kidney failure, effect on lungs and heart and other organs also. So if a diagnosis of pancreatitis is there, then we have to give IV fluids, supportive medications, and then follow the patient for first week. And once this first week is over and the patient is stable, it's a good news. Then comes the second and third week, in which we are more concerned about the infectious complications. So we have to check serially the blood sugar level, the TLC counts, and imaging. Sometimes we have to do CT scan serially to monitor the patient. And then as per the steps or complication, we can treat the patient. So it is very important to make the diagnosis in the first initial day 1. Acute pancreatitis बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेनक्रियास ग्रंथि में सूजन आती है किसी भी कारण से, खासकर जो लोग अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, जो स्मोकर्स हैं, या जिनके गॉल ब्लैडर पित्त की थैली में कोई स्टोन्स या स्लज हैं. उनमें सडनली एकदम तेज एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगा, बैक में जा रहा होगा, फीवर होगा, तो हमें अल्ट्रासाउंड ब्लड टेस्ट करा के डायग्नोस करना है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस को. इसकी शुरुआत के 2 या 3 दिन में कैसा इलाज दिया जाता है उस पर निर्भर करेगा मरीज सुधार आएगा या सीरियस होगा. तो हमें IV फ्लूइड्स या ड्रिप्स देनी पड़ती हैं पेशेंट को इनिशियल डेज में. डायग्नोसिस हम बनाते हैं अल्ट्रासाउंड ब्लड टेस्ट से, जिसमें अमाइलेज लाइपेज वैल्यूज़ होती हैं. अगर हम पहले 2-3 दिन में मरीज को अच्छे से मैनेज कर लें IV फ्लूइड से, सपोर्टिव से, और पेशेंट रिकवर हो जाता है पहले हफ्ते में, तो हमारी ये बहुत अच्छी खबर है. हम फिर अगले 2 या 3 हफ्ते में उसको फॉलो करते हैं. पेनक्रियास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है शुगर कंट्रोल करने में. तो इंसुलिन हार्मोन जाता है, तो मैं बीच बीच में शुगर भी चेक करने, कई पेशेंट्स में शुगर पर जाता है. इस तरीके से अगर हम एक्यूट पेनक्रेटाइटिस की बीमारी को सही समय पे जांच करके प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं पहले फर्स्ट 2 to 3 डेज में, तो हम पेशेंट की जांच करके पेशेंट की लाइफ को बचा सकते हैं. और आगे जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं हमें उन्हें मिनिमाइज करना है. हमें स्मोकिंग अवॉइड करनी है, अल्कोहल अवॉइड करना है, और अगर गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन्स या स्लज है तो हमें उसका कई बार ऑपरेशन करने से भी फ्यूचर अटैक से हम बचा सकते हैं.